So today's topic is our fruit. With the end of the placentation, where we have studied the types marginal placentation, axial placentation, parietal placentation, precentral placentation, basal placentation, and superficial placentation. You will go through the definitions vis-a-vis the diagrams. You will understand them better now. So today we will start with the fruit. What is fruit? बॉटनिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रूट हमें चाहिए। ऐसे तो आप फ्रूट को लेमैन, एक शॉपकीपर, एक कस्टमर, कोई भी खरीदार, दे विल गिव देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ फ्रूट, ओन वर्जन्स ऑफ व्हाट डज द फ्रूट मीन टू देम। लेकिन वी बीइंग द बॉटनी स्टूडेंट्स, हमें बॉटनिकली फ्रूट पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली फ्रूट। जब हम फ्रूट की बात करते हैं, आफ्टर पॉलिनेशन, एक पॉलिनेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड second male gamete fuses with the central cell in the ovary, so many developments occur, like there is development of seed, the ovules ripen into seed, and the ovary ripens or matures into fruit. So from this definition, that is the ovary ripens into fruit, we have fruit defined as, fruit को हम क्या define करेंगे? Fruit is defined as ripened ovary or mature ovary. अगर बॉटनिकली हम डिफिनीशन मांगेंगे व्हाट इज फ्रूट, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज फ्रूट? इट इज फर्टिलाइज्ड आर राइपेंड ओवरी। क्या हो गया फ्रूट? कोई बता दे व्हाट इज फ्रूट? फर्टिलाइज फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी इज फ्रूट। अब यहाँ पर मसला होता है, लुकिंग एट द definition of the fruit, so many questions may arise in your mind that क्या ओवरी में जो ओव्यूल्स है, सीड्स है, उनका बनना भी जरूरी है फ्रूट के लिए, या समटाइम्स फ्रूट इज फॉर्मड इवन विथआउट द सीड्स, यानी अवरी का मैच्योर होना सीड्स के साथ या सीड्स के बगैर भी पॉसिबल है फॉर द ओरी टू बिकम द फ्रूट। एंड जनरली एक फ्रूट में दीज पार्ट्स, जब हम आगे जाएंगे फ्रूट को हम, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, वी कैन हैव those fruits as well where the fruit has not been formed from the ori, and a typical fruit it consists of pericarp which is the fruit wall। इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे फिर। एंड फ्रूट में आते हैं सीड्स भी। इज सीड एवरी टाइम ए पार्ट ऑफ फ्रूट? क्या सीड हर टाइम फ्रूट का पार्ट होता है? आगे जाके हम देखेंगे। सीड जो है, द सीड्स, सीड बॉटनिकली सीड क्या होता है? कोई बताए व्हाट इज सीड? बॉटनिकली सीड क्या होता है? सीड इज, सीड क्या होता है? आप कोई बात ही नहीं करते हो। सीड इज, एम्ब्रियो। नो नो, सीड इज नॉट एम्ब्रियो। Seed is ripened ovule. Ovule is transformed into seed. यानी ovule is mature into seed. Ovule क्या होता है? What is ovule? 12th में नहीं पढ़ा है ovule क्या होता है? Ovule is integumented megasporangium. Ovule क्या होता है? What is ovule? Ovule क्या होता है? आप क्लास में ही हो? इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम देखेंगे क्या है एक्चुअल में। इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इस तरह, इसमें दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं, outer integument, inner integument। These integuments later on become the seed coat,
और इंट्यूगमेंट के अंदर होता है एक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द न्यूसिलस। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? न्यूसिलस। न्यूज न्यूसिलस में एम्ब्रियो होता है। दिस होल स्ट्रक्चर, that is integumented megasporangium. Actually, megasporangium megasporangium is the characteristic feature of pteridophytes gymnosperms, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर इंट्यूगमेंट्स बनते हैं, दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं। सो यूजुअली द मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म्स इज बाइटेजमिक, इसमें दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं। असल में हमारा ये इस टाइम सिलेबस नहीं है, सिलेबस में नहीं है हमारा। ये है मसला, मैंने इस पे बताया था आपको कि सीड्स क्या होते हैं। सीड्स आर ripened ovules, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, बट सम फ्रूट्स बट इन सम फ्रूट सीड्स आर नॉट फाउंड। कुछ फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं, लाइक ग्रेप्स में, बनाना में, एंड दोज फ्रूट्स आर कॉल्ड, उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्प And these parthenocarpic fruits have higher market value because seeds are not often preferred by the people. They prefer to have fruits without seeds. And these parthenocarpic fruits, so they have higher market value. Now, parthenocarpy is induced in plants to obtain seedless fruits. So this has become a very desirable character to make fruits more palatable, to make fruits more bigger in size, to have more delicious fruits. This has become a very valuable practice in horticulture now to produce parthenocarpic fruits. So now we are at this conclusion that the auri can transform into fruit. auri से फ्रूट बन सकता है, auri से फ्रूट बन सकता है इवन अगर फर्टिलाइजेशन भी ना हो। फर्टिलाइजेशन के बगैर भी auri कैन ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। दैट इज, auri को एक स्टिमुलस चाहिए पॉलिनेशन का, यानी auri के पेट लगी पता कि pollination has occurred, that is pollen grains have transferred to the stigma, and sometimes this ovary without fertilization inside, this can transform into fruit. And so when this ovary transforms into fruit without ovules being transformed into seed or ovules being developed in it, such fruits are called parthenocarpic fruits. And the phenomena wherein the sometimes फीमेल गैमेट हैज पोटेंशियल, फीमेल गैमेट को पोटेंशियल होता है टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज दैट फिनोमिना कॉल्ड? उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? जब जहां पे एक फीमेल गैमेट ट्रांसफॉर्म होता है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल, वी कॉल दिस फिनोमिना एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? parthenogenesis. And parthenogenesis occurs in so many insects. For example, in honeybees, where there isn't fertilization, those eggs transform into males. वो eggs क्या बनते हैं? Honeybees में Males. males बनते हैं. So in honeybees, males are haploid. Males haploid होते हैं. And जहां पे वहां फर्टिलाइजेशन होती है, those become females. वो फीमेल बन जाते हैं। इसी तरह we have an example in human beings as well. One of the mightiest messenger, Hazrat Isa alayhi salam was came into existence without male intervention. Now, coming to those fruits, we do not require fertilization, wherein the ovary can
have the potential to become the fruit without fertilization. We call these fruits as, क्या कहते हैं इन फ्रूट्स को? Parthenocarpic fruits. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. अब आपने ये भी पढ़ा कि एक फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प. पेरिकार्प क्या होता है? व्हाट इज पेरिकार्प? इट इज ए फ्रूट वॉल. पेरिकार्प क्या होता है? Fruit wall. आप कम करो, क्लास एंड करेंगे. यू आर नॉट इंटरेस्टेड. आप ना जवाब देते हो. ठीक है, क्लास कंटिन्यू No, करें sir. या क्लास कंटिन्यू करें? जी सर. आप रिप्लाई ही नहीं करते हो ना. कुन जोन छ ना, कुन जोन छ वारिया थकन इंसान. आपको, यू हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास. या अगर नहीं लेना चाहते हो तो मैं स्टॉप करूं. बताओ क्या करना है. हफ्सा क्या करना है? क्लास कंटिन्यू करें या बंद करूं मैं? कंटिन्यू सर. आप फिर मेरे साथ, मैं वनू तो रिप्लाई दे दो. अच्छा, फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्प. पेरिका. अगर इस पे निमो ये कार्पल. कार्पल बन. कार्पल का नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज आवरी. And ovary, what is inside, along with that whole, it becomes a fruit. Now this ovary wall, ovary का जो wall है, it becomes the wall of the fruit, because fruit is the ovary, ripened ovary or the mature ovary. This pericarp, it can be thick and it can be fleshy. It can be thick and hard. It can be thin and soft. There can be so many cases of pericarp. And पेरिकार्प इज नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. कितने लेयर्स में? 3 layers. 3 लेयर्स में. लुक, अगर हम इसको बनाएंगे पेरिकार्प को, दिस इज द आवरी वॉल. इसमें 3 लेयर है. बाहर वाला लेयर एक लेयर, इसके अंदर दूसरा लेयर, इसके अंदर तीसरा लेयर. एक लेयर, दूसरा और तीसरा. हाउ मेनी लेयर्स पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड? इनटू 3. 3 layers. Outermost layer is the epicarp, which is also called a rind. This Rind. layer first, it can be, it is also called as rind, and it is epicarp. The middle one is mesocarp, and the inner one is innermost layer. Innermost layer, this is the endocarp. So pericarp as a whole, इसको डिफरेंशिएट आप, इसको आप एपिकार्प के साथ कंफ्यूज ना करें. एपिकार्प इज द आउटर layer of the pericarp. Pericarp is overall the fruit wall, and pericarp is differentiated into how many layers? Epicarp, 3 layers. carp, and endocarp. Now here we can have variations, which is the edible part of the fruit. If it is epicarp, if it is mesocarp, if it is endocarp. We have so many variations in fruits. What part is there edible? Which part is fleshy? अगर आप मैंगो देखेंगे, मैंगो में आप अगर मैंगो को सेक्शन काटेंगे चाकू से, इसको ऊपर का एक सेक्शन उठाएंगे, जो मैंगो का बाहर वाला लेयर है, दैट इज द एपिकार्प. वो क्या होता है इसमें? डेल या सिकन मैंगो का. उसके बाद मैंगो में जो फ्लश होता है, दैट फ्लश यू ईट. दैट फ्लश यू ईट. व्हाट इज दैट फ्लश? दैट फ्लश क्या होता है? Meat. मीट होता है मैंगो. Edible. दैट इज वेरी स्टार्ची. उसमें बहुत मिठास होता है, बहुत मिठास होता है. एंड इनसाइड दिस अपर लेयर जो स्किन होता है मैंगो का, दैट इज द एपिकारप. जो इसका ये फ्लश होता है, दिस फ्लश इज मीजोकार्प. एंड इन मैंगो द फ्लश इज, द मीजोकार्प इज एडिबल.
यहाँ पे मीजोकार्प खाते हैं. एंड द इनर लेयर And इज हार्ड स्टोन लाइक. इसका यस जन अमिच ٲंٹ छ आसान, इसका सीड होता है. दिस इज द दिस इज द इनर लेयर एंड दिस इज स्टोन लाइक. दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प. रहा अब याद? yes, sir. एपिकार्प, mesocarp, and endocarp. Now we have what are true fruits and what are false fruits. At the very onset जब मैंने फ्रूट की definition start की, तो मैंने कहा कि fruit is the ripened ori, and उसके साथ साथ मैंने कहा कि we can have fruits even other than from the ori, that is other parts of the mm, flower of the inflorescence can take part in fruit formation. Now coming to true fruit is when the fruit is developed only from the ori. That is, ori ripens into fruit, and that fruit is called the true fruit. And the true fruit is, for example, we have mango, we have coconut, and we can have so many examples, ziziphus, etc. कमिंग टू द फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट में ट्रू फ्रूट से ही पता चलता है कि व्हाट कैन बी द फॉल्स फ्रूट. जब ट्रू फ्रूट में सिर्फ ओवरी पार्ट करती है अदर टू फॉर्म द ट्रू फ्रूट, एंड इन फॉल्स फ्रूट वी कैन हैव एनी पार्ट other than the ori, and in addition to ori as well. Like for example, फॉल्स फ्रूट आप पढ़ेंगे क्या है फॉल्स फ्रूट, और इसको हम फॉल्स फ्रूट को क्या कहते हैं? Pseudocarp. 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 So, false fruit are pseudocarp. In some fruits, in place of auri, some other parts of the flower like thalamus, like inflorescence, like calyx, they become the part of the fruit, or they become modified to become a fruit, or they are parts of the fruit. These types of fruits are called false fruits. See, to your surprise, the most famous fruit of Kashmir, that is the apple. It is not true fruit. Apple एक true fruit नहीं है. नहीं है. And आपने आपने भी पढ़ा कि we can have in the fruit thalamus, we can have inflorescence, we can have calyx, and these can become either part of the fruit or they become the fruits. Botanically they are not true fruits. Thalamus आपको पता ही है कि when the pedicel becomes swollen, इस पे floral insertion होता है. Floral insertion means कि floral parts insert होते हैं. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. And when this thalamus modifies into fruit, we can say it as a false fruit. In case of apple, it is the thalamus which is a modified, which becomes modified into fruit. यानी thalamus यहाँ पे fruit बनाता है apple में. Strawberry, that is not a true fruit. Strawberry में जैसे वो पूरी इन्फ्लोरेसेंस उसमें इन्वॉल्व होती है. Pear too is not a true fruit. Pear too, like apple, can be from the thalamus. Now we have classification of fruit. This is important. When we look at the definition of the fruit, that is when fruit it is from the ripened ori, then it is a true fruit. And when fruit is formed from other parts of the flower, inflorescence, along with the ori as well. यानी sometimes ori के साथ साथ बाकी parts फ्रूट में इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट बनाने में, और उन सारे फ्रूट्स को क्या कहते हैं? False fruits or pseudocarp. False fruits are pseudocarp. So one classification of fruit में हमें whether it is a whether it is from ripened ori only, then it is a true fruit, and whether there are other parts of the flower inflorescence taking part in fruit formation, then that is a false fruit. And now we have another classification. Fruits can be divided as simple fruits, aggregate fruits, and composite fruits. जरा आप रिपीट करें, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? क्या है ये क्लासिफिकेशन? सिंपल फ्रूट बताइए. Simple fruit, aggregate fruit, composed fruit. Composite fruit. Coming to the definition of this simple fruit,
Simple fruit, they develop from monocarpellary ori और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओरी। ये टर्म्स हमने पहले ही पढ़े हैं। अगर हम मोनोकार्पलरी ओरी की बात करेंगे, व्हाट इज मोनोकार्पलरी ओरी? दैट ओरी जिसमें वन कार्पल एक ही इन्वॉल्व होती है, एक ही कार्पल, एक ही कार्पल। एंड व्हाट इज देन मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओरी? जिसमें बहुत सारे कार्पल। मल्टीकार्पलरी हो गया बहुत सारे, दो से सिन ज्यादा कार्पस। कार्पल, दो से ज्यादा कार्पल्स, एक से ज्यादा कार्पल। लेकिन सिन कार्पस यानी फ्यूज्ड कार्पल्स, कार्पल्स आर फ्यूज्ड। So we can have simple fruits formed from monocarpellary ori, as well as they can form from multicarpellary syncarpus ori as well. Only one fruit is formed by the gynoecium. लेकिन यहाँ पे gynoecium सिर्फ एक ही फ्रूट बनाती है। क्या बनाती है? एक ही फ्रूट। एक ही फ्रूट। And the fruit can be fleshy, it can be dry. What is now meant by fleshy fruit? Fleshy fruit, from the word meaning itself, flesh, meat. Flesh stands for meat. These fruit is developed from superior or inferior syncarpus gynoecium. Again, we have superior ori or inferior ori. Superior ori को हम क्या कहते हैं? Hypogynous condition भी. That is, ovary is above all floral parts. Ori क्या होती है? Sepal petal staminus. Ovary occupies the top position. This condition is called hypogynous condition, and the ovary is called superior ovary. Or ovary can be inferior as well. That is, ovary के टॉप पे बाकी फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमनस, and this ovary is called epigynous. यानी epi means ऊपर, gynous means gynoecium, ovary, and this can be syncarpus, that is carpels are fused. These may be, the ovary can be unilocular and it can have many locules. For example, when it has many carpels, so it can have many locules as well, many chambers, and each chamber will represent a individual ovary. These fruits can be indehiscent. Indehiscent matlab they do not shed from the plant. Otherwise, they have to be detached from the plant. ये plant से जड़ नहीं जाते हैं. Dispersal of seeds occurs after pericarp is destroyed. यानी in fruits में what happens? Seeds disperse होते हैं. Seeds are released from the fruit only when pericarp is destroyed. What is pericarp? पेरिकार्प क्या फ्रूट होता है? वॉल। फ्रूट वाल होता है, ओरी का वाल फ्रूट होता है। वॉल। जब ओरी का वाल पूरा खत्म हो जाता है, देन ओनली सीड्स आर रिलीज्ड। नाउ वी हैव फ्लशी फ्रूट्स की, फ्लशी फ्रूट्स आर ऑफ टाइप्स। फ्लशी फ्रूट्स में हमें टाइप्स है। फ्लशी फ्रूट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। यू विल फर्स्ट गो थ्रू द टाइप्स ओनली। फ्लशी फ्रूट्स में एक आता है ड्रूप, दूसरा आता है बेरी। आया समझ? यस सर। ओ, पेपो, पेपो के बाद पोम, पोम, पोम के बाद हेस्पेरिडियम, बैलस, बैलस, बैलस्टा, एम्फिसार्का। फिर हम उठाएंगे सिंपल ड्राई फ्रूट्स। सिंपल ड्राई फ्रूट्स में भी you have classification. We have indecent, we have decent, we have schizocarpic fruits. These are examples of simple dry fruits. So we have a very long elaboration of fruits. उसके बाद simple fruits के बाद we have aggregate fruits. Aggregate fruits में आपके types है। आप जरा पढ़िए क्या क्या टाइप है। Iterios or follicles. Iterio of follicles, iterio of achenes, iterio of berries, iterio of drupes. उसके बाद we have third category,
composite fruits. And composite fruits, for your kind information, all composite fruits are false fruits. और इसमें सोरोसिस है, इसमें geocarpic fruit है. So here we will end the description on fruits. So we have to deal with the fruits component wise. कहाँ तक हम कहाँ तक पहुंचे? अभी कहाँ तक पहुंचे हम? Fleshy fruit types. इसमें और एक लेक्चर लगेगा. फ्लशी फ्रूट्स में अब टाइप्स है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वी विल डिवाइड इट इन वन मोर लेक्चर ताकि यू विल इजीली अंडरस्टैंड, रिमेंबर एज वेल. अभी तक आप जो हमने आज पढ़ा इसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. रफ में भी आपने कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे. अब हम कल इंशाल्लाह इसको फिनिश करेंगे. अब फ्लशी फ्रूट्स लेंगे. अब फ्लशी फ्रूट्स में वी हैव ड्रूप, वी हैव बेरी. पहले हम ड्रूप उठाएंगे. व्हाट इज ड्रूप? आपने एक बार खुद भी फ्रूट्स पढ़े हैं कि नहीं? Yes, sir. Mango का होता है. ड्रूप क्या होता है? These fruit is developed from mono or multicarpellary syncarpus superiori. This is important. ये जो ड्रूप है, ये either it can form from one ovary with one carpel only, and it can form from ovary with many carpels, and those carpels are fused, and the ovary is superior. That is, all other parts are below the level of the ovary. Superior ovary को हम floral फार्मूला में ऐसे दिखाते हैं. इन दीज फ्रूट्स जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प. पेरिकार्प को डिफरेंशिएट करते हैं. पेरिकार्प में हाउ मेनी लेयर्स इन पेरिकार्प? वी हैव अपर एपिकार्प, वी हैव मिडल मेसोकार्प. दिस इज एपिकार्प, दिस इज सेकंड इज मेसोकार्प, एंड द थर्ड इज एंडोकार्प. Outer is epicarp, middle is mesocarp, and the third is endocarp. अब यहाँ पे इनमें क्या होता है? Endocarp is hard and stony, so these fruits are also called stony fruits. ये यहाँ पे आपको मदद करेगा. Drupes are also called stony fruits. अब इनमें क्या है? एक important character. इनका जो एंडोकार्प है, that is hard and that is stony. इस पर ऊंट छासन. आप वो खोबानी के वो उसका वो लेंगे, उसका एंडोकार्प कितना हार्ड स्टूनी होता है. प्लम का, पीच का, इसी तरह मैंगो का. इसमें एग्जांपल्स है मैंगो, कोकोनट, आलमंड, पीच, वालनट, प्लम. दीज आर एग्जांपल्स. मोस्टली रोजेसी फैमिली के आते हैं इसमें. ब्रैकिसिक्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन एंडोकार्प. यहाँ पे वन टाइप ऑफ सिक्लेरिड, सिक्लेरनकाइमा के सेल्स होते हैं जिनको हम ब्रैकिसिक्लेरिड्स, दे आर ब्रांचेड सिक्लेरिड्स. दे आर प्रेजेंट इन दिस एंडोकार्प एंड दे दस मेक द एंडोकार्प हार्ड स्टोन लाइक. इन मैंगो जो इसका एडिबल पार्ट होता है, पहले भी मैंने बताया, एडिबल पार्ट इन मैंगो इज कॉल्ड मेसोकार्प. मेसोकार्प जो होता है मैंगो का, दैट इज एडिबल. Mango में edible part is not called mesocarp, but mesocarp in mango is edible. And the part where seed is protected is called endocarp. जो मैंगो में आप फेंकते हैं वो उसका अंदर वाला वो सीड या तो आंट छुवाना, that is the endocarp, and in that endocarp is the seed. अगर आपको मैंगो ग्रो करनी है, you have to sow the seed of that mango in the soil. In bar, एपिकार्प एंड मेसोकार्प बोथ आर एडिबल पार्ट्स. बर में क्या है? दोनों, एपिकार्प और मेसोकार्प दोनों एडिबल है. समटाइम्स कोई मैंगो में भी वो एपिकार्प भी खाता है. मैंगो का वो बाहर वाला स्किन वो भी खाते हैं. द रिंड ऑफ आलमंड, आलमंड का रिंड, रिंड किसको कहते हैं? ये भी हम पढ़ रहे थे. व्हाट इज रिंड? Epicarp. Epicarp of almond and walnut are
रिंड एपिकार्प को नहीं कहते हैं, एपिकार्प को Yes, sir. Epicarp. अभी पढ़ा था ना हमने, Outermost layer. आउटर मोस्ट लेयर। Yes, sir. अच्छा, हाँ आउटर मोस्ट लेयर। कहाँ तक पहुंचे हम? रिंड ऑफ आलमंड एंड वॉलनट आर एंडोकार्प एंड देयर एडिबल पार्ट इज सीड। इनका जो आलमंड और इसका, किसका, वॉलनट का एडिबल पार्ट क्या होता है? Walnut. सीड। ये आते गोजिश खावन नट जो खाते हैं इनमें। इन कोकोनट एपिकार्प इज हार्ड, बहुत सख्त होता है, एंड थिन। मेसोकार्प इसमें थिक होता है, एंड कंस ऑफ हार्ड फाइबर्स। एंडोकार्प इसमें हार्ड होता है, एंड सीड इज प्रोटेक्टेड इन इट। एंडोस्पर्म इसमें एडिबल होता है। जो आप कोकोनट में खाते हैं, व्हाट यू ईट दैट, दैट इज द एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म Endosperm. पहले होता है। कोकोनट में जो मिल्क होता है, कोकोनट के अंदर जो मिल्क होता है, फ्रेश कोकोनट में, अनराइप कोकोनट में ज्यादा होता है। वो मिल्क जो होता है, दैट इज एक्चुअली द, व्हाट इज दैट, कोई बताए मुझे? दैट इज एक्चुअली द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है? Nuclear endosperm. Nuclear. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज दे आर ओनली द न्यूक्लियर ऑफ द सेल्स। फिर उसके बाद सेलुलराइजेशन होती है। सेलुलराइजेशन मतलब सेल्स बनते हैं अराउंड द न्यूक्लियर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल सेलुलराइजेशन। बाहर वाला जो एंडोस्पर्म, दैट बिकम्स द सेलुलर एंडोस्पर्म, and this cellular endosperm is the flesh of the coconut that you eat, and that milk which remains even after the formation of cellular endosperm is still nuclear endosperm। यानी सेलुलराइजेशन इन प्रोसेस होती है, और कुछ न्यूक्लियर फ्री होते हैं। दोज फ्री न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूट द, व्हाट दे कॉन्स्टिट्यूट, दे कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो इसमें आप Endosperm. जो कोकोनट में आप वो मीट खाते हैं, दैट मीट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या होता है? Cellular endosperm. और उस कोकोनट में अंदर एक सीड होता है। ये सारा इसको सीड ही कहते हैं। अब यू हैव नाउ बेरी। बेरी, these fruit is developed from mono or multicarpellary syncarp, sorry। यहाँ पर again we can have gynoecium with one carpel, we can have gynoecium with many carpels as well, and those carpels are fused. Ovary may be, here we have two cases. Ovary can either be superior or ovary can either be inferior, but in drupe the ovary condition is always Superior. superior। यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटेशन इज आइदर एक्साइल, एक्साइल होता है फ्री सेंट्रल टिश्यू के माउंट के साथ अटैच होते हैं ओव्यूल्स, और इट कैन बी पैरिटल, पैरिटल हो गए जब ओवरी वाल्स के अटैच होते हैं, ओवरी वाल्स के साथ अटैच होते हैं ओव्यूल्स। सो प्लेसेंटेशन कैन बी, व्हाट कैन बी प्लेसेंटेशन, इट कैन बी एक्साइल और Axial or पैरिटल। parietal. इन दीज यानी बेरी, Okay, sir. बेरी में क्या होते हैं? एपिकार्प इज थिन, यहाँ पे एपिकार्प बहुत थिन होती है, एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन फ्लशी पार्ट, फ्लशी पार्ट्स में सीड्स होते हैं। इनिशियली सीड्स आर अटैच्ड विद प्लेसेंटा फ्रूट, बट लेटर ऑन अपॉन मैचुरेशन द सीड्स गेट डिटैच्ड विद द प्लेसेंटा एंड स्प्रेड रैंडमली इन फ्लशी पार्ट। अब इसमें बेरी में हमें आते हैं प्लांट्स विद सुपीरियर ओरी, फॉर एग्जांपल टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल। आप इन फ्रूट्स को दिमाग में लाइए। ब्रिंजल भी फ्रूट है, ग्रेप्स आर फ्रूट्स, टोमेटो इज ए फ्रूट, एंड दे आर बेरी फ्रूट्स, एंड they develop from the ori which is superior. We have in the berry we have plants with inferior ori, for example guava है, banana है। गावा में भी वो सीड्स आपको उस टिश्यू के साथ मिक्स होते हैं। बनाना भी, बनाना इज ए बेरी, banana is a berry, but banana is formed from the where the condition of the ovary is inferior. Date palm, look at the date palm. Date palm too is one seeded berry,
वी हैव लेस देन 1 मिनट, हम कल इसको इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। डेट पाम इज वन सीडेड बेरी, इन इट पेरिकार्प जो है, व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल, it is divided into epicarp, it is divided into mesocarp, and it is divided into endocarp. Date palm, आप जानते हैं what is date palm? Yes, sir. क्या होता है डेट पाम? अटेंडेंस करो सारे लोग, First, अटेंडेंस